and welcome back to my YouTube channel, where science is made fun and easy for all of you. In the last video, we have learned about balancing the chemical equations, and today I am going to take a topic types of chemical reactions. Before we begin, let me ask you a very simple question. Have you ever seen a burning candle or have you ever seen setting up a curd? So, what are these around you? These all are chemical reactions. But chemical reactions are not only of one kind. So, we have categorized these chemical reactions into certain types depending upon the behavior of the reactants and how they are combining together, right? So just think of a tiny seed which has turned into a plant. What is it? It is again a chemical reaction. Just think how the plants prepare their food by the process of photosynthesis. That is also a chemical reaction. Think of your respiration, how your body is producing energy. That is also a chemical reaction, but taking place in a living body. So specifically, we call it a biochemical reaction. And here we are going to categorize these reactions into simple types so that you can understand them better. So we have majorly five types of chemical reactions. The first one is combination, in which the two small substances combine together to form two or more compounds. The second one is decomposition reaction. Decomposition का क्या मतलब होता है? What do we mean by decomposition? Just break the word. Decompose होना. Decompose means when a substance split into simpler substances, that is known as decomposition. Does it occur on its own? The answer is no, because it requires certain amount of energy to split the compound into smaller and simpler substances. The next one is displacement reaction. So this is a fight between a stronger and a weaker. So obviously in every case the stronger wins. Similarly, here also the more reactive element is going to displace the less reactive element. So here in displacement reaction, as the name suggests, displace मतलब किसी भी एलिमेंट को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देना, हटा देना. सो व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड डिस्प्लेसमेंट, अब कौन हटा सकता है? द वन विच इज मोर स्ट्रॉन्गर टू द वन विच इज comparatively less stronger. In displacement reactions, we will see that the more stronger element is going to displace the less stronger element, right? So that element could be metal and that element can also be non-metal. Now when we are talking of double displacement, अब double displacement मतलब displacement हो रहा है but two times हो रहा है. So इसको हम बहुत easily explain कर सकते हैं by the process of exchange of ions. और exchange of ions भी तभी होता है when the stronger element means the element with more reactivity is going to displace the element with less reactivity, and they both exchange their ions within their respective compounds. And the last one, the fifth type of reaction is the redox reaction. It is the clubbing of two different reactions, that is reduction and oxidation. So this word red has come from the word reduction and ox has come from the word oxidation. Your food get oxidized, right? So certain elements get reduced, like some elements are found in the form of their oxides. So we can use carbon, heat to reduce them and to separate them from the oxide molecule, right? Oxide ion. So here in redox reaction, we will be learning these type of reactions in which we will see that reduction and oxidation are taking place simultaneously. साथ साथ हो रहे हैं. Now we'll deep dive into these reactions and we will understand each type of reactions one by one. अब हम ये सारे reactions एक एक करके समझेंगे. The very first type of reaction is the combination reaction. सबसे पहला कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चा? Two or more substances are combining together to form a single substance. अब कॉम्बिनेशन किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन किन्हीं दो कंपाउंड्स के बीच में भी हो सकता है, एंड कॉम्बिनेशन में ऑल्सो हैपन बिटवीन एन एलिमेंट or a compound, right? So I have simplified combination reactions for all of you into three different categories so that you can understand in a better way.
So here the first reaction I have written is the formation of water, right? This reaction is talking about formation of water. So in this reaction, we can clearly see, children, that hydrogen and oxygen are combining together to form a water molecule. So इसमें क्या combine हुआ? Hydrogen elements combine with oxygen elements to form water, right? And this is a type of combination reaction. In combination reaction में भी further आप किसका combination पढ़ रहे हैं? You are learning about the combination of two elements. And in the second is the formation of ammonia gas. यहाँ पे हम क्या इस reaction में क्या form हो रहा है? Ammonia gas. और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कुछ कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ कंपाउंड्स की, अगर आप याद रखेंगे एज अ 10th क्लास स्टूडेंट, इट विल हेल्प यू टू एड्रेस ऑल हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन. So here we are having a nitrogen molecule in the gaseous form, thus chemically combining with the hydrogen molecule in the gaseous form to produce a gas which is known as ammonia gas. And how does it smell like? It smells like rotten eggs, children. How does it smell like? Rotten eggs. Now this is a burning of coal, or we may also call it combustion of coal. The third reaction is talking about, right, what do we call it? Combustion of coal, where coal is burned in the presence of ऑक्सीजन. जहां पे हम कोल को बर्न करते हैं किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. एंड विच गैस इज इवॉल्व? कार्बन डाइऑक्साइड. ये आप ध्यान रखेंगे, कार्बन इज फाउंड इन द नेचर इन मेनी फॉर्म. कोल, it's not only carbon. Coal has little bit amount of nitrogen and oxygen present into it. Carbon is also in its allotropic form, diamond and graphite. तो आप जब भी कार्बन का कोई भी फॉर्म बर्न करेंगे या कार्बन कंपाउंड विल अंडरगो कंबशन, always which gas is evolved during the chemical reaction? Carbon dioxide gas. So इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? We have learned about the combination of two elements. We have seen the formation of water. We have seen the formation of ammonia gas, and we have also learned about the combustion of coal. Now let us move further and try to understand the combination of two compounds. अब जब हम compounds की बात कर रहे हैं, so this reaction is very simple, and you have done this reaction in endothermic. So ये reaction repeat हो रही है, but ये reaction आपको समझाएगी combination of two compounds. Right? What are you going to learn here? The combination of two compounds, children. So यहाँ पे which two compounds are combining together chemically? Calcium oxide and water. And I told you, I've given you help box in my previous videos. Whenever any substance reacts with water, it always forms corresponding hydroxide. So here quicklime is, we are pouring some water into quicklime, right? And it produces the slaked lime, which is also commonly known as lime water, right? इसके solution को हम क्या बोलते हैं बेटा? Lime water, and heat is produced. So this is a type of exothermic reaction. ये कैसा reaction हो गया? Exothermic reaction. But this is a characteristic property. अब what I have noticed in most of the students, they get confused between the two, the type of reaction and the characteristic property. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताएंगे तो आप एक्सोथर्मिक बोलेंगे. बट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप टाइप ऑफ रिएक्शन बताएंगे, देन यू हैव टू टेल द any one of 5 types which the reaction is showing. So here the two simpler compounds are combining together to form slaked lime, right, which is known as lime water. And heat is evolved. Since heat is evolved, so which characteristic property is it showing? The change in temperature. And the it is an exothermic reaction. And which type of reaction is it? Because you can see the combination of two compounds within it, and two compounds thus form the two simpler compounds as formed in two or more compounds, or just one compound here, that is lime water, right? So this is a combination reaction for two compounds. Now let us see one more reaction. And children, this is when the ammonia gas is reacted with the hydrogen chloride gas. हाइड्रोजन क्लोराइड अगर गैस लिखा हुआ है, so it is in the gaseous form, but HCl अगर dilute लिखा हुआ है, तो that is in the aqueous form, it's acidic form.
right? That becomes a mineral acid. So when two combine, children, what does it form? It forms ammonium chloride. अब इसका आप जरा आयनाइजेशन करके देख लो, राइट? अमोनिया किस में ब्रेक करता है? अमोनिया का आयनिक फॉर्म होता है NH4+. व्हाट इज द आयनिक फॉर्म ऑफ अमोनिया? दैट इज NH4+. एंड जब आप HCl को करेंगे, आयनाइज करेंगे, सो H+Cl-, right? So these hydrogen ions also combines with this, and thus what does it form? It forms ammonium chloride. What will it form? It will form ammonium chloride, right, children? So let us move further. Let us proceed further to move to next type of chemical reaction, that is the combination of element and compound. अभी तक जो आप combination reaction में पढ़ते आ रहे हैं, you were learning about two types of combination of elements, combination of compounds. But here you are going to learn about the combination of an element and a compound. So यहाँ पे हम element और compound के बारे में पढ़ रहे हैं. So here the compound is carbon monoxide. When you give it, right, when it undergoes combustion and you give it sufficient amount of oxygen, it is going to form carbon dioxide. And here you have nitrogen monoxide. When it combines with oxygen, it forms nitrogen oxide, right? So this is a combination of an element and compound. So here in this type of reaction, we have understood and we have learned that when you are combining two simpler elements together, you get the compound, right? Those two elements combine together to form the compound. When you are combining the two compounds together, you get the compound itself, one compound or more than one compound, and the element and compound can also combine chemically with one another to give you compounds ahead. So with this, we have finished our types of combination reaction. Now we are moving further to the next type of chemical reaction, that is decomposition reaction. So decomposition reaction is just opposite of combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में बेटा हम क्या पढ़ रहे थे कि दो सिंपलर कंपाउंड्स हैं, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर, राइट? दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में स्प्लिटिंग नोटिस किया जाता है. What do we observe in decomposition reaction? It splits. It breaks down into simpler compounds. So you have a single compound, right? That single compound decomposes to form two or more simpler compounds. And mark my words, children, and be careful about it, that decomposition reactions are always endothermic. So you'll get many questions in the exam जिसमें आपको decomposition दे रखा होगा, and they will be asking about whether it is exothermic or endothermic. तो आपको ध्यान रखना है डिकम्पोजिशन कैसे भी हो रहा हो, राइट? डिकम्पोजिशन के भी फर्दर हम 3 टाइप्स में उसको कैटेगराइज करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझेंगे, जिससे आप क्लैरिटी से समझ पाए कि डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है. So decomposition reactions are the endothermic reaction. Endothermic मतलब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो सराउंडिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इट ड्रॉप्स डाउन, इट फॉल्स डाउन, राइट? अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड है, वो डिकम्पोज करेगा, मतलब वो ब्रेक करेगा ना. क्वेश्चन कम्स कि ये ऐसे ही ब्रेक कर जाएगा? द आंसर, जस्ट थिंक, टेक 10 सेकेंड्स एंड थिंक ऑन योर ओन. क्या ये अपने आप ब्रेक हो जाएगा? ब्रेक करने के लिए इफ आई नीड टू ब्रेक अ पेंसिल, सो आई हैव टू अप्लाई द फोर्स, राइट? सो yes, the external energy, wherever we are applying the force, the energy is involved. So similarly, in order to decompose that single compound, right, the energy is involved. And upon decomposition, that single compound splits into two or more simpler compounds. ये जो सिंगल कंपाउंड होगा ये स्प्लिट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स में. अब इसको हम समझते हैं कि किस टाइप की एनर्जी हमें चाहिए, राइट? व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डू वी नीड टू let the compound decompose? We require, right, we require heat energy, we require light energy, and we also require electricity to break. But we need to understand here one thing, there is a catch, कि जब आपको एनर्जी चाहिए and that energy is giving you a little push to split the compound into two, to break the compound into two or more compounds, or to decompose,
right, to decompose the compound. And that energy is required to break the bonds of the given chemical compound. राइट अभी एनर्जी हमें किस लिए चाहिए? ये बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए चाहिए हमें ऑफ अ गिवन केमिकल कंपाउंड. अब एनर्जी किसका फॉर्म में है? हीट की फॉर्म में है, लाइट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है. राइट. सो व्हेन डू वी नीड हीट, व्हेन डू वी नीड लाइट, एंड व्हेन डू वी नीड इलेक्ट्रिसिटी? Children, here we need to understand one thing, that give me 1 minute. So in order to understand कि कहाँ हमें heat energy की requirement है to decompose the compound, where do we need light energy and where do we need electricity, we have to understand the reactivity series of the metals, right? Right. So this reactivity series basically tells us about the nature of the metal. Some metals are very reactive, some metals are moderately reactive, and some metals are least reactive. So very reactive metal means they will undergo very strong chemical bonding. Moderately reactive metals means they will undergo a chemical bonding, yes, but the force of attraction between the elements of a given chemical compound is not that as strong. And in case of least reactive, they are easy to split apart, right? You don't require a very huge amount of energy to split these compounds or to part these elements from the given chemical compound. So here like we have potassium, we have sodium, we have calcium, we have magnesium. ये सब थोड़े aluminium, ये सब highly reactive होते हैं, right? तो इनकी जो bonding होती है, they are having strong FOAs. FOAs means strong force of attraction. जब हम moderately reactive की बात करते हैं तो moderately reactive में yes, they are chemically combined together, but the force of attraction between the elements in a given chemical compound is not that as strong as it is with the highly reactive ones. And least reactive की तो आप बात ही मत करो, they are easy to set apart. Little form of energy is sufficient to split them up into the simpler compounds. Now we'll understand here children. So अब heat कौन सा फॉर्म? हीट किसके लिए चाहिए होता है? हमें मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए चाहिए होता है, राइट? लाइट किसके लिए चाहिए होता है? हमें लीस्ट रिएक्टिव के लिए चाहिए होता है. तो ये बात समझने वाली है. If the metals are moderately reactive, right, so then we require heat as a form of energy to split the simple compound into single compound into more simpler compounds. Light means sunlight, right? So these such kind of reactions are known as photolytic reactions. So अब light sunlight तो बहुत little form of energy है. So आप खुद से सोचो और बताओ हमें ये किस टाइप के compounds के लिए चाहिए होगा? The compounds which are made up of least reactive metals, right? The compound which are made up of least reactive metals. अब electricity, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी हैज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब इलेक्ट्रिसिटी का जब हाईएस्ट फॉर्म है, सो दैट इज वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द highly reactive metal from its given chemical compound, right? Highly reactive metal. So दिस यू मस्ट नो. हर चीज याद करने की नहीं होती, रोड लर्निंग की नहीं होती. कुछ चीजें समझ के भी आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. अगर आपको मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में पता है, सो यू कैन इजीली मेक आउट कि दिस इज अ कंपाउंड ऑफ दिस इज अ कंपाउंड ऑफ अ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल. सो आई विल यूज हीट एनर्जी टू डिकम्पोज द कंपाउंड. दिस इज अ कंपाउंड ऑफ least reactive metal, right? So I will use photolytic reactions. I'll use sunlight to split the compound. For example, silver compounds like silver chloride, silver bromide. Similarly, if it is a compound of highly reactive metal, जैसे कि for example, highly reactive में you have sodium chloride, you have aluminium oxide, water is also there, but water is an exception, which can only be split into its respective elements or simpler compounds using electricity. Now, on the basis of type of energy we use to split or decompose a given chemical compound, we have categorized our decomposition reaction into three types. Of heat. Just think of the another word or synonym for heat. We also call it thermal.
right? So when we are using heat as a form of energy to decompose the compound, such kind of decomposition reactions are known as thermal decomposition. When you're using light, but light आप किसके light के दूसरा नाम क्या होता है? Photons, because the particles of light are known as photons. So such type of reactions are known as photo decompositions, or we also call it photolytic. आपको सारे नेम्स पता होने चाहिए, बिकॉज अगर आपको सारे नेम्स पता होंगे यू विल बी एबल टू एड्रेस द क्वेश्चंस इन द एग्जाम इजीली. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो, सो दैट इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, राइट? सो एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. The word lysis is the word which is taken from English, right? And lysis का मतलब होता है to split, to break. So we are using, right, thermolysis. Thermolysis means using heat energy to split. Photolysis means using light energy to split. Electrolysis means using electrical energy to split a given chemical compound. Now we'll understand. अब आपको यहाँ पे सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं कि डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है. डिकम्पोजिशन हम खुद से नहीं कर सकते हैं, सो वी नीड एनर्जी. वी नीड एनर्जी टू डिकम्पोज. अब एनर्जी भी कौन सी चाहिए, कब चाहिए, ये भी आपने समझ लिया. अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनर्जी हमने अपनी ईज के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर लिया है. If it is heat, then it is thermal decomposition or thermolysis. If it is light, then it is photo decomposition or photolysis. If it is electricity, then it is electrolysis or electric decomposition. Right. Now let us understand each type of decomposition one by one. Right, children. So we are starting here with the thermal decomposition. अब thermal decomposition के लिए अंदर आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेटल कौन सा होने वाला है, moderately reactive होने वाला है. So we have calcium carbonate with what we commonly called limestone. राइट और ये हमें कहाँ मिलता है? कंस्ट्रक्शंस में लाइमस्टोन बहुत यूज होता है. राइट, इट इज फाउंड इन द मार्बल्स. सो here we need to understand, since calcium is a moderately reactive metal, so we are going to use heat to decompose the atom, and this decomposed into calcium oxide and carbon dioxide. यहाँ पे भी एक catch है, यहाँ पे भी आप एक बात ध्यान रखेंगे. Now what is the catch here? Whenever, write and make a hell box, children. Make a hell box. Whenever any carbonate, right? Whenever any carbonate is decomposing, जब भी आप किसी कार्बोनेट, राइट, कार्बोनेट कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हो, यू ऑलवेज ऑलवेज गेट कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. जब भी कोई कार्बन डाइऑक्साइड, वाइस वर्सा भी है, जब भी कोई एक्स कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनेट बनाता है. और जब भी कोई कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा होता है तो वो एक कंपाउंड बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा. सॉल्ट के साथ कौन सी गैस इवॉल्व होगी? That gas will be carbon dioxide. So here when you are burning limestone, you are heating limestone, you get a quick lime and the carbon dioxide gases evolve. अगर मैं आपको एक recap के लिए एक चीज पूछूं, this type of chemical reaction is showing which characteristic property of a chemical reaction, तो आप easily मुझे बता पाएंगे? That is, think, that is evolution of gas. And which type of reaction is it? This is decomposition reaction. अब ये characteristic property कौन सी show कर रहा है? Evolution of gas. अब type of reaction क्या है? Decomposition reaction. So I don't want my children to mess up between the two things, type of reaction and second one is the characteristic property. So two are different things, children. And next one, you're using lead nitrate, superly important reaction. ये तीनों ही reaction बहुत important है और बहुत frequently आपके exams में पूछे जाते हैं. So no compromise with these, right? So whenever you are having a lead nitrate, right, your lead nitrate, when you're heating, when it is heated up, this lead nitrate forms the corresponding oxide, right? And the two gases are evolved here. Brown color gas, which is nitrogen dioxide, and oxygen is also evolved. So which characteristic property? Again, the evolution of gas. Second, which characteristic property here? We are talking about, children. Here we are talking about the color change, right? We will understand here the color change also. It is
all, it is not necessary that one reaction will show one characteristic property. One reaction can also show more than one characteristic. तो अभी हमने इसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस तो समझा एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द टू कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कलर चेंज. सो अगर हम इसको कलर चेंज से समझते हैं तो लेड नाइट्रेट एक ऐसा कंपाउंड है, लेड नाइट्रेट इज कलरलेस इन नेचर. Lead nitrate कैसा compound है children? Colorless. And if I talk about lead oxide is yellow in color, right? Lead oxide का color क्या होता है? Yellow. So whenever you are going to decompose this colorless compound, you'll see the yellow compound form. Along with the yellow compound, you will also see the brown fumes of nitrogen dioxide, right? And oxygen gases evolve. Usually ये reactions कभी भी directly नहीं पूछे जाएंगे आपसे exams में. They'll give you clue. We have a colorless compound X which undergoes a thermal decomposition to form a yellow colored compound Y, and brown fumes of Z are produced, and W is also produced, which is a supporter of combustion. तो आपको क्या दिया गया इस पूरे क्वेश्चन में? क्लूज दिए गए हैं. आपको बताया गया कि कोई एक्स कंपाउंड है जो कलरलेस है, उसको हमने हीट करके डिकम्पोज किया, उसने येलो कलर का कंपाउंड बनाया है. इस रिएक्शन में ब्राउन कलर के फ्यूम्स जेड के प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक गैस साथ में इवॉल्व हो रही है विच इज अ सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन. So in none of the places they have given you that this compound is undergoing decomposition. So you have to be very particular about the reaction. आपको color change पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इस reaction में कौन कौन सी gases evolve हो रही हैं, then only you will be able to address such kind of questions. तो इसमें colorless compound कौन सा हुआ बच्चा? लेड नाइट्रेट, राइट. और येलो कलर का कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो रहा है? लेड ऑक्साइड. अलोंग विद दैट येलो कलर, ये एक ही रिएक्शन है. दिस इज द ओनली रिएक्शन थ्रू आउट योर 10th क्लास जिसमें आप एक कलरलेस कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हो, राइट, यूजिंग हीट, and it is forming a yellow color compound, and along with that brown fumes are formed, and another gas is also involved. So here X is lead nitrate, Y is lead oxide, and Z is nitrogen dioxide, and W is oxygen gas. Now let us understand about the third type of chemical reaction, and that is about, third example of decomposition reaction, and that is about the decomposition of ferrous sulfate, and it is lightish green in color. फेरस सल्फेट कैसा होता है? लाइटिश ग्रीन और ग्रैनुलर क्रिस्टल्स होते हैं इसके. व्हेन यू हीट इट, इट टर्न्स ब्राउन. अब कलर चेंज हो रहा है इसमें, राइट. हीट हो रहा है और सिंपलर कंपाउंड्स में स्प्लिट हो रहा है, तो कौन सा वाला टाइप हो गया? ये हो गया एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन सी शो कर रहा है? Light green to dark brown. Which characteristic property is shown here? Color change, right? And also you can see the two gases evolve, sulfur dioxide and sulfur trioxide. So here you will get a burning smell of sulfur. इस reaction में आपको burning smell of sulfur भी you are able to smell it, right? So these are the two indications. So there are two characteristics which this reaction is showing. One is evolution of gas, right? Evolution of gas, children. And second one is the color change. And which type of reaction is it? This is decomposition reaction. ये कैसा reaction है? ये decomposition reaction है. Now we will move to the other type of decomposition reaction, that is the decomposition of potassium chlorate, right? So ये चारों ही reactions decomposition के super important है children. So potassium chlorate को जब आप heat करते हो, what will you get? You will get potassium chloride and manganese dioxide. अब इस reaction के time पे आपको ध्यान क्या रखना है? Which kind of decomposition is it? This is thermal decomposition. Which characteristic property is it showing? This is showing a property of evolution of gas. And which gas is evolved and what is its property?
Oxygen gas is evolved here, and it is a supporter of combustion. Right, children? So let's move ahead to the next type of decomposition reaction, that is photolysis. And photolysis, we use it for the least reactive metals. तो यहाँ पे आप photolysis देख पा रहे हैं सिल्वर क्लोराइड का एंड सिल्वर ब्रोमाइड का. राइट, सिल्वर क्लोराइड हैज द टेंडेंसी टू टर्न ग्रे इन सनलाइट. राइट, so silver chloride when it is photolytically decomposed means when it is kept under sunlight. So what do you observe? You observe the formation of silver, that which is responsible for the color change, which is gray, and the chlorine gas is evolved. And chlorine gas is also not a colorless gas. The color of chlorine gas is yellowish green. तो कलर्स का खूब अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज जितने भी क्लूज आएंगे या तो कलर्स को लेके आएंगे या फिर वो कंपाउंड कोई पिक्यूलियर प्रॉपर्टी शो करता है, इस चीज को लेके आपको क्लूज आएंगे एग्जाम में. ठीक है, सो सिल्वर क्लोराइड इज टर्निंग ग्रे. व्हाई सिल्वर क्लोराइड इज टर्निंग ग्रे हेयर? राइट, द सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट इन कलर, सो देयर यू कैन सी अ कलर चेंज एज वेल एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस. दोनों चीजें हो रही हैं. जो व्हाइट कलर है वो किस में टर्न कर रहा है? ग्रे कलर में. राइट, एंड येलोविश ग्रीन फ्यूम्स आप देख पाएंगे ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एंड दोज फ्यूम्स आर ऑफ क्लोरीन गैस. Right, children? And these above reaction is used in black and white photography. जब भी photographs को develop किया जाता है, they are put into the solution of silver chloride or silver bromide. Similarly, if you talk about silver bromide, children, the color of silver bromide is pale yellow. Right? इसका कलर कैसा होता है बच्चा? इसका कलर होता है पेल येलो, एंड यहाँ पे कलर चेंज किसमें हो रहा है? ग्रीन. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रोमीन गैस? ये 9th क्लास से आपको याद है, आपने एक डिफ्यूजन की एक्टिविटी की थी, दैट इज रेड ब्राउन. राइट, इसमें ब्रोमीन का कलर क्या है बच्चा? द कलर ऑफ ब्रोमीन इज रेड ब्राउन. Right, children? So here you have only two reactions in your book that we have covered. That is the photolytic decomposition of silver chloride and silver bromide. Silver chloride में आपका white color का silver chloride convert हो जाता है, gray और yellowish green gas evolve हो रहा है. So completely a color change and evolution of a gas. So two characteristic properties of a chemical reaction it is showing. One is evolution of gas, and second one is the color change from white to gray, and the yellowish green fumes are producing. In the second reaction, that is the photolytic decomposition of silver bromide here, the pale yellow silver bromide, when it is photolytically decomposed, it turns into green color silver, and red brown fumes of bromines are evolved. Right? So here with this, we have covered the second type of decomposition. We have seen with the moderately reactive metal compounds are decomposed using heat, and least reactive metal compounds are decomposed using sunlight. So let's talk about the third type of decomposition, which is electrolytic decomposition, and we also call it electrolysis. अब electrolysis means you're using electrical energy as a form of energy to decompose a given chemical compound. अब electrical energy is a high form of energy. So the compound must be of highly reactive metal. अब sodium comes in the second place of the reactivity series after potassium. So sodium is one of the highly reactive metal, right? So sodium chloride means the common salt. इसको हम commonly क्या बोलते हैं? Common salt. आपने देखा होगा common salt को अगर आप heat भी करते हो तो it doesn't split, वो अपनी properties change नहीं करता, right? Because it has high melting point. Now why does it have high melting point? सोचो, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है. सोडियम क्लोराइड, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज सुपरली हाई. ये बहुत हाई होता है. अब हाई जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करने के लिए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी. So when you pass electric current through sodium chloride, it turns into sodium and chlorine.
अब यहाँ लिखा है कैथोड और एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस समझने के लिए आपको कैथोड और एनोड समझना पड़ेगा। सो लेट मी एक्सप्लेन यू चिल्ड्रन हियर। अगर हम कैथोड और एनोड की बात करते हैं, कैथोड एंड एनोड आर टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैविंग डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट ऑन इट। अब इसको याद करने का बहुत इजी सा तरीका है। 9th क्लास में हम सब ने कैटायंस और एनायंस पढ़े थे। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, राइट। कैटायंस के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनायंस के ऊपर क्या चार्ज होता है बच्चा? नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैटायंस ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और कौन सी इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, राइट चिल्ड्रन। सो इसको इजी करने के लिए अगर आप ये बात ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। जो नेगेटिव वाली होती है वो होती है कैथोड, और जो पॉजिटिव वाली होती है वो होती है एनोड। अब इसको आप इजी करके कैसे समझ सकते हो? एनायन सभी बच्चों को याद रहते हैं कि कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज। तो आप हमेशा ये बात रखेंगे कि और याद रखेंगे कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो कैटायंस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड एनायंस मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स। सो कैटायंस गो टुवर्ड्स द कैथोड एंड एनायंस गो टुवर्ड्स द एनोड। क कैटायन क कैथोड, अ एनायन अ एनोड। सो कैटायन से ही वर्ड आया है कैथोड, एनायन से ही वर्ड बन गया है एनोड। सो कैटायंस किसके पास जाते हैं? कैथोड के पास जाते हैं। एनायंस किसके पास जाते हैं? एनोड के पास जाते हैं। ठीक है। अब इस रिएक्शन को समझने के लिए आप समझेंगे कि जो सोडियम है, जब सोडियम क्लोराइड में से आयनाइजेशन, राइट, इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, सो इट हैज फॉर्म्ड Na+ and it has also formed Cl-. So sodium are the cations and chloride ions are the anions. So cations goes towards the cathode and anions goes towards the anode. So negatively charge किसके पास जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। और पॉजिटिवली चार्ज किसके पास जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे अगर आप ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि cations goes towards cathode, anions goes towards anode, right children? So here when you are putting the solution of sodium chloride, liquid लिखा है ना, you either take it in molten form or you will take it in its aqueous solution form. क्यों? क्योंकि it enhances the liquid form and the molten form or the aqueous solution has much more conductivity as compared to the dry form, right? So as soon as the electric current passes through it, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो सोडियम क्लोराइड स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगा सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में। cations goes towards cathode, anions goes towards anode. So cations will go towards negative electrode because opposite charges attract each other, and anions will go towards the पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो विद दिस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। तो रिएक्शंस को सिर्फ मगअप नहीं करना कि सोडियम क्लोराइड हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, सोडियम बन गया, क्लोरीन बन गया। भाई कैसे बन रहा है? हाउ इट इज फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड व्हेन इट इज splitting, the old bonds break and then only the new bonds form here, right? So it is very important for you to understand what's going on during a chemical reaction. Now let us understand with few more examples, right? So now if you have understood the concept very well, the concept of two electrodes and the concept of moving of ions towards the oppositely charged electrode, you will be able to understand the electrolysis of water very easily, right? So in your NCRTs, you have this electrolysis of water, which is which is one of the activities of your NCRT book, right? So when we talk about electrolysis of water, again, we are using electrical energy to decompose the water into two simpler molecules, that is hydrogen molecule and oxygen molecule. So अगर मैं इनके ions बनाऊंगी, so hydrogen exists as hydrogen ion H plus and oxygen exists as oxide ion, that is O2 minus, because we know that hydrogen is an exceptional non-metal which forms a cation also, right? And oxygen itself is a non-metal, so definitely forming an anion.
राइट, क्योंकि नॉन मेटल्स हमेशा एनायंस बनाते हैं, मेटल्स हमेशा केटायंस बनाते हैं। अब इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से हम समझते हैं। वी हैव टेकन एन इन्वर्टेड ग्लास फ्लास्क, राइट, इन विच वी हैव फिटेड अ रबर कॉक। अब रबर कॉक हमने क्यों फिट किया है बच्चा? बिकॉज हम उसमें इरेक्ट पोजिशन में दो इलेक्ट्रॉड्स, कार्बन इलेक्ट्रॉड्स को फिट कर सके। So the carbon electrode doesn't have its own charge. We give charge via the two terminals of the battery. So here we are having the two terminals of the battery, right? The positive terminal and the negative terminal. So negative terminals makes up an carbon electrode as a cathode and the positive terminal makes it as a anode. अभी आपको बस वही याद रखना है, cations goes towards the cathode, so cathode is negatively charged. Anions move towards the anode, so anode is positively charged, right? So rubber cork is helping basically these carbon electrodes to be fitted within it in an erect position. So we have put an inverted glass tubes here. Now what is the purpose of putting inverted glass tubes? हमने यहाँ पे inverted glass tubes क्यों रखा है बच्चा? So that we can collect the gas which is evolved, because the two simpler compounds, that is hydrogen molecule and oxygen molecule, are evolving in the form of gas, right children? So here we are also going to add some amount of sulfuric acid into it, right? Why we are adding some amount of sulfuric acid into it? To enhance the conductivity. इसकी conductivity को increase करने के लिए हम क्या कर देंगे? हम इसमें sulfuric acid डालेंगे जिससे ionization जो है वो एकदम से quicker हो जाए. Right children? So अब हम क्या करेंगे? We will as soon as we turn on the battery, we are supplying the electric current to the water molecules containing sulfuric acid. It should be few drops, right? Just to enhance the conductivity. Now we'll see the effervescence which is being produced in both the test tubes. Right, children? Now, effervescence is indicating the evolution of the gas. Bubbling is indicating the evolution of the gas during the chemical reaction. Now, children, we must know that hydrogen ions are the cations, so they move towards the cathode, right? तो negative electrode की तरफ जो gas produce हो रही है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? दैट इज हाइड्रोजन गैस. और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो गैस प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन एंड हाइड्रोजन गैस इज made up of hydrogen ions which is positively charged ions. And what we have noticed during the chemical reaction, that the amount of hydrogen gas produced in a cathode is double the amount of oxygen gas which is produced at anode, right? So this has been noticed. So two volumes, right? Two volumes of hydrogen gas is produced and one volume of oxygen gas is produced. So we can say that during the electrolysis of water, hydrogen and oxygen are produced in the ratio of 2:1 by volume. Right, children? They are produced in the ratio of 2:1 by volume. तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हो क्या रहा है. And there are certain observations. What we have observed that the amount of hydrogen gas is double the amount of oxygen gas, or vice versa, the amount of oxygen gas is half the amount of hydrogen gas produced during the electrolysis of water. So this activity is very important. This is given in your NCERT, and this activity is for the electrolytic decomposition of water. So अगर आप सारी चीजें समझ के करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. एक क्विकली रिकैप करते हैं तो वी हैव टू इलेक्ट्रॉड्स, टू कार्बन इलेक्ट्रॉड्स, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. पॉजिटिव वाला एनोड है और नेगेटिव वाला कैथोड है, right? So we have taken water and we have added few drops of sulfuric acid. Sulfuric acid क्यों डाला था हमने? कि हम उस water की conductivity को increase कर पाए और जो dissociation into ions है उसको हम promote कर पाए, so that the water can split into the ions quickly and at a faster pace, right children? And why we put the glass bottles, glass test tubes in an inverted position? In order to collect the gas evolved during the chemical reaction. So there are two gases. One, हाइड्रोजन गैस का प्रॉपर्टी क्या है? जो आपने हाइड्रोजन गैस कलेक्ट किया आप टेस्ट भी कर सकते हैं. एंड यू नो द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस. व्हाट इज इट? इट बर्न्स द कैंडल विद पॉपअप साउंड. तो ये बर्निंग करेगा बिकॉज ये गैस हाईली इन्फ्लेमेबल होती है. सो इट कैचेस फायर वेरी क्विकली एंड दस लीडिंग टू अ लिटिल एक्सप्लोजन, राइट? एंड हेयर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर आप लेकर आओगे एक बर्निंग कैंडल के पास तो उसकी जो बर्निंग हो जाएगी, जो उसकी फायर होगी, इट विल बिकम मोर ब्राइटर. Why the
fire is getting brighter. Why the light is getting brighter here? Because oxygen is a supporter of combustion. आप जितना ज्यादा ऑक्सीजन दोगे उतना कंबशन अच्छे से होगा, और जितना कंबशन अच्छे से होगा उतनी ही ज्यादा लाइट जो होगी वो ब्राइट प्रोड्यूस होगी. तो हर चीज का रीजन है, हर चीज का टेस्ट है, और जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसमें कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं. और इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी? दैट द वॉल्यूम्स ऑफ hydrogen will be double the volume of oxygen during the chemical reaction. Right, children? So with this, we have covered the electrolytic decomposition reactions. I hope you have understood it well. And among 5 chemical reactions, आज वाले क्लास में हमने कौन कौन से reactions cover किए अच्छे से? Combination reaction and decomposition reaction. Listen children, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो कभी भी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा. तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें. यू मस्ट नो वाई एंड हाउ बिहाइंड एवरीथिंग. जब आपको वाई और हाउ पता होगा एंड यू विल बी रेडी विद ऑल द थिंग्स, you will be able to address any sort of question, whether it is competency, high competency, assertion reason, or MCQ in your exams gracefully, and you will good to go to score full marks in your exam. Science is very interesting if you connect with your daily life. अब आज अपने आस पास आज का आपका एक्टिविटी रहेगा कि आप अपने आस पास देखो कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस आप देख पा रहे हो in your daily day to day life, and just try to categorize those reactions into decomposition or combination reaction. Right? कुछ reactions सोचो and write down in the comments below कि मैम I have thought about this reaction. This is a combination or decomposition reaction. Think of burning of candle wax. बताइए कौन सा reaction है वो. Think of settling down the curd. Tell me. Turning of seedlets, tiny seed into plantlet. किस type का reaction होगा वो? So just try to connect your subject with your daily life. जब आप ऐसा करने लगेंगे, then you will make your subject super easy for you and you will fall in love with science. So that's all for today. Thank you. Bye-bye.